Good morning, students. Today our lecture number is 15 and today's date is 4th May 2020. Now we have seen chapter 1, that is introduction of partnership, and chapter number 3, that is valuation of goodwill. Now today we start chapter number 4, that is reconstruction of partnership. But before starting this chapter, we must know from this chapter how many marks question will be there in exam. So I have written from this chapter there will be one question in section A, that is MCQ, and one question that is in section B, that is short question answer, and one question in section C, that is of 3 marks, and that is example. So from this chapter they will ask total 5 marks question. Okay, one in section A, one in section B, and one question in section C, and these always example. Okay, now we start our chapter number 4, that is reconstruction of partnership. But before that, what is reconstruction? What is reconstruction of partnership firm? That we know. So reconstruction of partnership firm means changes in partnership due to several reasons. What is reconstruction of partnership? Changes in partnership due to several reasons. यानी हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें चेंजेस होता है, किसकी वजह से? उसके लिए बहुत सारे reason है. Okay, so when there is change in existing partnership firm due to several reasons, it is called reconstruction of partnership firm. So this kind of question they can ask in exam. What is reconstruction of partnership firm? So what is your answer? Reconstruction of partnership firm means changes in partnership due to several reasons. Now reasons means उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो mainly there are 3 reasons. Because of these 3 reasons, there is a changes in partnership firm, and due to that there is a reconstruction of partnership firm. वो कौन कौन से? So मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं. Reason for changes in partnership firm. First, the change in the ratio of profit and loss. P/L means what? Profit and loss. The change in the ratio of profit and loss between the continuing पार्टनर्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब चेंज होता है, एट दैट टाइम देयर इज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. दैट इज फर्स्ट रीजन. नाउ सेकंड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. सो व्हेनेवर इन कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप फर्म न्यू पार्टनर विल बी एड और न्यू पार्टनर विल एंटर, एट दैट टाइम देयर इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एंड थर्ड रीजन, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म. यानी हमारी एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें से कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसमें से किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उस केस में देयर इज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो दीज आर द मेन 3 रीजंस फॉर व्हिच देयर इज अ नीड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दे कैन आस्क हाउ मेनी रीजंस आर देयर. So how many reasons are there? 3. Which are they? So these are the 3. Okay. So this is what reconstruction of partnership firm. Okay. Now we have seen 3 reasons are there for reconstruction of partnership firm. Now today we discuss very first, that is the changes in profit loss sharing ratio or distributing ratio between the continuing partners. यानी कब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर होगा? जो पहला रीजन क्या है? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स. नाउ हियर आई हैव रिटन 4 रीजंस फॉर चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स. बट बिफोर दिस, एज वी नो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, it will not be changed once it is agreed. But if it is necessary or if it is needed, then it can be changed with the consent of all existing continuous partners. यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स के अंदर एक बार डिसाइड हो जाता है वो चेंज होता नहीं है. लेकिन अगर फर्म में ऐसी कोई जरूरत आती है और कोई ऐसी कंडीशन या सिचुएशन आती है तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन सभी पार्टनर्स की मंजूरी के साथ, अगर सभी पार्टनर्स एग्री है तो. ओके, सो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता है? सो आई हैव रिटन 4. सो डिस्कस वन बाय वन. दैट इज फर्स्ट,
when a partner in charge of the firm is not able to manage the firm on the grounds of illness or incapability or some personal reasons. यानी when a partner in charge of the firm is not able to manage the firm on the grounds of illness or incapability or some personal reasons. अगर हम बिजनेस करते हैं और हमारे बिजनेस में कोई ऐसा पार्टनरशिप, वो क्या है, इलनेस यानी बीमार है, और इनकैपेबल वो उतना सक्षम नहीं है, या कोई और रीजन से वो बिजनेस को कंट्रोल कर सकता नहीं है या बिजनेस को मैनेज कर सकता नहीं है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ओके, सो both are selling profit and loss ratio in 1:1. Now both are manage the business every day, but because of some reason Mr. B is not able to manage the business on fully basis. For example, due to his illness or due to his incapable, due to accident, okay, or some other reason. So now Mr. A will manage whole business. So now here मिस्टर ए को ऐसा लगेगा कि पूरा बिजनेस पहले हम दोनों देखते थे तो प्रॉफिट लॉस कैसा होता था, इक्वल यानी आधा आधा, लेकिन अब पूरा बिजनेस में ही मैनेज करता हूँ, बी तो क्या करता है, सिर्फ कैपिटल दिया है, बाकी तो बिजनेस में आता नहीं है, वो घर पे ही रहता है, तो हम दोनों का शेयर अब एक होना चाहिए नहीं, तो अब वो लोग क्या करेंगे, अपना रेशियो 1:1 से 2:1. सो प्रीवियसली देयर रेशियो वाज 1:1, बट आफ्टर इलनेस और इनकैपेबिलिटी ऑफ Mr. B or some other reason of Mr. B, they change their ratio from 1:2:1. So here they have changed their ratio from 1:1 to 2:1. So why they have changed the ratio? Because Mr. B is not capable or he is ill or some other reasons he is not managed to business, है ना, वो अपना बिजनेस अच्छी तरह मैनेज कर सकता नहीं है, तो इस केस में प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता है. Okay, so this is the first reason when any partner is not able to manage the firm or business because of any reason, they change their profit and loss ratio. Now second, when a partner cannot devote enough time, यानी जब कोई पार्टनर्स अपना पूरा समय नहीं दे सकता है टू रन अ बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, है ना, और इस केस में अदर पार्टनर हैज टू सब्स्टिट्यूट हिम, इसकी वजह से दूसरे पार्टनर को उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी कि उस पार्टनर का काम उस पार्टनर को करना पड़ता है, तो फॉर व्हाट, टू रन द बिजनेस. इस रीजन में ऐसा बोला गया है कि when a partner cannot devote enough time to run a business, the other partner has to substitute him and run the business. यानी दो पार्टनर्स है A एंड B, दोनों पार्टनर्स पहले बिजनेस रन करते थे, लेकिन दोनों में से कोई एक पार्टनर बिजनेस को अपना पूरा समय दे सकता नहीं है, कोई भी रीजन हो, मान लो कि उसने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया हो, या उसने दूसरी फॉर्म में पार्टनरशिप कर ली हो, या उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, है ना, कोई भी रीजन से वो पूरा टाइम दे सकता नहीं है, तो क्या होता है, उस पार्टनर का जो भी काम होता है वो दूसरे पार्टनर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट यानी उसको करना पड़ता है उसकी जगह. तो अब सही बात है कि मान लो ए एंड बी दोनों पार्टनर्स है, अगेन दोनों प्रॉफिट लॉस शेयरिंग इन 1:1. नाउ मिस्टर बी इज नॉट गिव इनफ टाइम टू द बिजनेस, देन इन दिस केस अगेन मिस्टर ए चेंज हिज रेशियो फ्रॉम 1 to 2, दैट इज 2:1, यानी मिस्टर बी को कितना मिलेगा, 1 शेयर, और मिस्टर कितना मिलेगा, 2 शेयर, बिकॉज नाउ ऑल बिजनेस इज रन बाय मिस्टर ए, पूरा बिजनेस कौन रन करता है, मिस्टर ए. ओके, सो इस केस में दे चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बिकॉज ऑफ व्हेन एनी पार्टनर इज नॉट डिवोट इनफ टाइम टू द बिजनेस फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस, और वो बिजनेस कौन देखता है, फिर दूसरा पार्टनर. क्लियर? तो दिस इज द सेकंड रीजन, इन दिस केस दे चेंज देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो. नाउ थर्ड वन, दैट इज ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब फर्म के अंदर से कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर्स की डेथ होती है, तो उस केस में भी प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता है. कैसे? तो फॉर एग्जांपल हियर देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C and their profit loss ratio is 1:1. Okay, it means equal. Now suppose Mr. C is retired or dead,
So now how many partners are there in business? Two. They are A and B. Okay. Now after retirement or death of partner C, Mr. A and Mr. B, both partners have decided their new ratio, that is 1:1. 1:1, or you can say 2:1. Okay. So after retirement of Mr. C, profit and loss ratio of A and B is changed, because now there are two partners instead of थ्री. पहले तीन पार्टनर्स थे, अब कितने पार्टनर्स हो गए? दो पार्टनर्स हो गए. पहले इनका रेशियो कितना था? तो यू कैन से 1/3 एंड 1/3. नाउ व्हाट इज द रेशियो? 2/3 एंड 1/3. So here there is a change in profit and loss ratio of Mr. A and Mr. B. Okay. So when this happen, so when any partners is retired from the firm or when any partners is dead. Okay. जब कोई partners retired होता है या किसी पार्टनर्स की क्या होती है? डेथ. इन दिस सिचुएशन आल्सो देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. नाउ सेम वे फोर्थ रीजन, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. नाउ एज वी नो, इफ वी हैव मेंशन इन आवर पार्टनरशिप डीड, we can add a new person in our firm as a partner. Okay, but when new partner enter in the firm, profit and loss ratio will be changed. Okay, now how? Okay, now when new partner enter in the business, profit and loss ratio is changed. So suppose there was two partners in a firm, that is A and B, and their profit and loss ratio is 1:1, that is they share their profit and loss in equal ratio. Now they admit a new partner, that is Mr. C. So now there are how many partners? Three, A, B and C. So now their ratio is 1:1. It means 1/2, here 1/2, here 1/3, 1/3 and 1/3. Okay. Now what happened? Due to admission of new partner, as and when there is change in profit and loss saying ratio, there is a change in profit and loss. Okay, इससे प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंट आता है जो पार्टनर्स को मिलता है उसमें. यानी कि जब पहले पार्टनरशिप हमें दो पार्टनर्स है A एंड B, और सपोज प्रॉफिट इज 90,000, सो दोनों के बीच में इक्वली कितना आएगा? इफ वी डिवाइड दिस प्रॉफिट इक्वली, देन both will receive 45,000 and 45,000 because their profit loss ratio is equal. So 90,000 into 1/2, so you will get how many? 45,000. But after the admission of Mr. C, suppose profit is 90,000 again. Now this profit is distributed in this ratio equal, that is 30,000, 30,000 and 30,000. यानी after admission of Mr. C, Mr. A will get how many? 30,000. Mr. B will get 30,000 and Mr. C will also get 30,000. But before the admission of Mr. C, Mr. A get how many? 45 and Mr. B get how many? 45. So from this we can say, अगर जब पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है, उससे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, और उससे जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है ना, उसमें भी चेंज होता है. जैसे कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को पहले कितना मिला? 45,000. बट आफ्टर द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी दे विल गेट हाउ मेनी? 30,000 and 30,000, यानी 30,000 मिलता है. तो कितना कम मिलता है? सो 45,000 माइनस 30,000, हाउ मेनी? 15,000. और बी को भी 15,000. जितना ए एंड बी को कम मिलता है, दैट इज 15,000 प्लस 15,000, टोटल हाउ मेनी? 30,000. दैट इज द प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर. यानी कि बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, old partner will sacrifice, and that is the gain of new partner. Okay, so these are the four reasons. Due to these reasons, there is a change in profit and loss ratio between the partners, and because of this change in profit and loss ratio, there is a change in profit and loss between the partners. Okay, okay. Now here from this change in profit and loss ratio, जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है उससे क्या होता है? किसी पार्टनर्स को क्या होगा? प्रॉफिट, और किसी पार्टनर्स को क्या होगा? लॉस. तो जिसको प्रॉफिट होगा उसको हम बोलते हैं गेन, और जिसको लॉस होता है इसको बोलते हैं हम सेक्रीफाइस. एंड फ्रॉम दिस वी नो सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ पार्टनर्स. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी sacrifice ratio and gain ratio, and
what is the meaning of sacrifice ratio, what is the meaning of gain ratio, and what is the formula to find out sacrifice of partners, and what is the formula to find out gain of the partners. Okay, और इससे हम ये भी जान सकते हैं कि किस पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होता है और किस पार्टनर्स को गेन होता है. ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस इन दिस टॉपिक that is meaning of reconstruction of partnership, then reasons for reconstruction of partnership, and then out of these three reasons we have discussed very first reason, that is when there is a change in property loss ratio or distributing ratio among the partners. Okay, so you note down these points in your notebooks and see you tomorrow. Okay, thank you and have a nice day.